Now, duodenum receives openings from liver and pancreas. Liver has gallbladder in it which secretes bile juice. Bile juice has no enzyme present in it for digestion of food. It contains bile salts. Two bile salts are sodium taurocolate and sodium glycocolate, and two bile pigments are present, biliverdin and bilirubin. Cholesterol is present and phospholipids are present. So what is the role of these bile pigments? They help in emulsification of food, which we have done in class 10 also. That is, the larger fat molecule, it is converted into small droplets of food in the presence of bile salts and bile pigments, and this process is called emulsification of fats. Now, pancreas secretes pancreatic juice. The pancreatic juice contains several inactive enzymes and some active enzymes. The inactive enzymes are trypsinogen, chymotrypsinogen, and procarboxypeptidase. As we can see, it has JAN, PRO. तो ये कौन से हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, procarboxypeptidase. Now, from small intestine, इलियम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम है enterokinase. This enterokinase, it comes into the duodenum, acts upon trypsinogen and converts this inactive trypsinogen into active form, that is trypsin. इलियम से स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है हमारे पास ड्यूडिनम, देन जेजुनम, और फिर हमने देखा था वी हैव दिस इलियम. यहाँ पे प्रेजेंट थी पैंक्रिया. तो यहाँ इलियम से हमारे पास आएगा ये एंजाइम एंटेरोकाइनेज. इट विल गो इनटू द ड्यूडिनम एंड इट विल एक्टिवेट द पैंक्रियाटिक एंजाइम. ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्रिप्सिन. तो जब ट्रिप्सिन एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो बाकी दोनों एंजाइम्स काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को वो एक्टिवेट कर देगा, और काइमोट्रिप्सिनोजन विल बिकम काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज विल बिकम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. नाउ these three enzymes, trypsinogen, chymotrypsinogen and carboxypeptidase, they act upon proteins, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस. सारी प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा और उनको किस में कन्वर्ट कर देगा? इनटू डाइपेप्टाइड्स. Now, these were the inactive enzymes present in pancreatic juice. Now, the active enzymes present are, they are lipases, which will act upon fats and convert them into fatty acid and glycerol. There are present amylases, which will act upon carbohydrates and will convert them into simple sugars. There are present nucleases. Nucleases will act upon nucleic acids and will convert and will digest them into their components. We will see in the intestinal juices how they will convert.